Let's start. Let's start. Our next session is absolutely a representation of the grassroots library creators, builders, and the voices of the people who that library belongs to. And I will let our panelists sort of introduce themselves. I'm just very, very, very proud to be their Sathi. So this panel will be moderated by Jatin Lalit Singh of the Basa Community Library from Hardoi district, Uttar Pradesh. So over to you, Jatin. Thank you, Purnima. Zindabad, Satrangi Salam, Johar, Jai Bhim Sathiyon. A very warm welcome to all of you for joining us today. My name is Jatin Lalit. I am the General Secretary of Free Libraries Network. I also run a community library in my village in Hardoi district of Uttar Pradesh, which is the first free community library of an entire district, catering to 36 villages impacting 40,000 population. Just like me, we have other Sathis here who also run free community libraries in their districts, in their villages, in their bastis. We heard from Emily that libraries are not place where we just sit in silence, but they are also spaces where conversation prosper. And as pointed by Sivadasan, the Rajya Sabha MP from Kerala, that libraries are places for conversation. And he mentioned about the newspaper thing, that at the tea stall people come and read newspapers. And he also talked about that there is one person who reads newspaper to everybody who cannot read. I would just begin by a very small story from my village. Before starting this library in 2020, there is this person called Mahendra, and he was famous in Basa and around Basa for just one fact, that he used to read the same newspaper thrice in a day because he do not have other literature to read. And now he is the regular member of the library, issues more than 3 books in a week, and is reading for pleasure. So together we gathered today we gathered to explore the profound library landscape in India, not just as repository of books, but as transformative spaces of access, dialogue, and resistance. Our panel brings together passionate library activists and librarians from diverse socioeconomic and regional contexts who are tirelessly working to redefine what libraries can and should be in India, and who are reimagining libraries as social infrastructure. These are spaces that do far more than lend books. They are platforms for democratizing knowledge, challenging systematic inequalities, and creating safe, inclusive environment for thinking, learning, and collective imagination. Today, this conversation will explore the critical challenges grassroots libraries face, the unique opportunities they create, and the powerful role they play in fostering inclusivity, community dialogue, and resistance against intrinsic inequalities. We will begin by introducing our panelists who represent libraries from across India. We'll start with Banu. Hello everyone, I'm Banu. I run a free library in Kadalur, Tamil Nadu. I facilitate weekly reading sessions in different government schools and low-budget schools. Most of these schools, they do not have a library. There are some old picture books mostly, but children can read them only in school. They cannot borrow books. So I take around 100 books to each school every week. I read aloud from picture books, and after that, children can choose books to take home and read. So basically, children have only one picture book to read for the entire week, which is definitely not enough. They want to read, they need to read more and more books. They want to read books every day. They want to read books in Tamil as well as in simple English. They want to listen to read alouds with their friends every day. But for this to happen, they need a fully functional school library with excellent collection of books and programs, where they can borrow books daily, where they can participate in read alouds daily, where they can attend different art and literary programs. They also need libraries in their communities where they can go outside of their school hours to borrow books or to read with their friends, where the entire community has access to books and programs. Like this one person, meeting them for 45 minutes in a week is definitely not enough. We need to demand for more free libraries, celebrating individual efforts, like one person running a library at home, or mobile libraries visiting communities every week. That's really not helpful. We need to continue to demand for more free libraries with excellent resources. Thank you, Banu. From our Sathi from South India to our Sathi from Delhi, where I first volunteered in 2017, where I met Sumit. Sumit, please.
Jai Bhim, Satrangi Salam, and Zindabad Sathiyo. I am Sumit. I am a Dalit leader in Free Library Movement. I studied in a very big private school, APJ school. I got admitted through economically weaker section category because I was poor. And I have studied there for 8 years, and I've been being humiliated and bullied there for 8 years. And that oppression left me with self-doubt and blame. But the community library project runs 3. हाँ, मुझे लग रहा है कि ये माइक बेकार है क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना ऐसे स्पेसेस की, तो मिलता नहीं, हमसे छीना जाता है. So the community library project runs 3 free anti-caste libraries in Delhi NCR. और लाइब्रेरी में 45,000 से ज़्यादा किताबें हैं. आपको वहाँ बामा फोस्तीना, अंबेडकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मीना कंदसामी की, ये सारी किताबें जिन्होंने मुझे मेरी दलित पहचान से रूबरू करवाया वो तो मिलेंगी, बट साथ साथ आपको जापानीज़ मांगा भी मिलेगा. लाइब्रेरी में 12,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं. और जब मैं फ्री और एक्सेलेंट की बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़रूरी है समझना कि फ्री और एक्सेलेंट साथ में जुड़ा हुआ है. मतलब वो ऐसी फ्री लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पर वॉशरूम गंदे हैं या दीवारों पे से पेंट उतर रहा है या पंखे नहीं चल रहे. वो बहुत एक्सेलेंट, स्पेस वाइज बहुत एक्सेलेंट है, क्योंकि जब मैं 2017 में वहाँ पहली बार घुसा तो मुझे प्यार हो गया. मेरा एक्सेस नहीं था उससे पहले किताबों तक. रीडिंग काफ़ी पसंद थी पर कोई भी एक्सेस नहीं था. और अक्सर जिस लाइब्रेरी में मैं तीनों ब्रांचेस में घूमता हूँ, अक्सर वहाँ देखने को मिलता है कि मेंबर्स अपने पेरेंट्स को, ये बंद हो गया है, अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, हाँ. तो अक्सर देखने को मिलता है कि जो मेंबर्स हैं लाइब्रेरी के वो अपने पेरेंट्स को कहानियाँ पढ़ के सुना रहे हैं. अक्सर देखने को मिलता है कि पेरेंट्स, जैसे एमिली ने शुरू में कहा कि लाइब्रेरी एक स्पेसेस हो सकते हैं, सेफ स्पेसेस. मेंबर्स के पेरेंट्स आते हैं अक्सर पूछने के लिए कि क्या मेरा बच्चा यहाँ आया था, किस टाइम आया था, वो घर कब गया. ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं. साथ साथ हमारे यंग मेंबर्स 6 महीने की ट्रेनिंग करते हैं लाइब्रेरी की ओनरशिप लेने के लिए, स्टूडेंट लीडर बनने के लिए. और जो हमारे यूथ लीडर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी और बिल्ड करते हैं फ्री लाइब्रेरी मूवमेंट में अपनी ओनरशिप के लिए. तो हाँ. Thank you so much, Sumit. Moving from New Delhi to Northeast, we have a powerful leader from Northeast, Ritu Parna. Thank you, Jatin. Jai Bhim, Satrangi Salam, Zindabad, Johar. I'm Ritu Parna. I'm from Assam. I live along with the river Brahmaputra, and I run 2 free community library in Assam. One is in my own village, that is Project Kitape Kotha Koi Community Library. The other one is Chandrababa Hoikiani Feminist Library and Resource Center, that is in Dibrugarh. What Amelie was mentioning about it during her speech as well. Why I do the work, what I'm doing now, it is because during my childhood, somehow I got some access to books because my father was a school teacher, but there was no library. And it was an upsetting thing for me because I wanted to have a library. And because I read about library in those books, but there is no library. But I was really happy when I was shifted to a bigger school in class 8 standard. This school had an excellent library. Excellent means excellent because it has diverse collection, it had good furniture to sit, and most importantly, the library was not only open during the library period, which is supposed to be always now adjunct into maths class or supplement to science class, but our library was open during the leisure time. And I could escape from the bully, harassment, because I, as a growing up queer child, all those happened to me. I could escape from those only because I had the library, which was open during the leisure time. So library gave me the life, and if somebody asked me, Rituparna, as a queer person, what saved you? It's library which saved me. And library can save the world. And this is why I am running library. And as again I growing up, and I started working with my community. That time when we needed to organize us within the feminist movement, I could not find a better place than a free library to organize all of us for the justice what we need. So this is where I run free community library, I run feminist library, because every space has to be feminist. So this is where all the work which is happening now, and I resonate with all my friends. Thank you.
Thank you so much, Rituparna, for that powerful introduction. Now we have Sabha from Madhya Pradesh. जिंदाबाद, जय भीम साथियों। मेरा नाम सबा है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। भोपाल में हम सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख लाइब्रेरीज संचालित करते हैं। ये लाइब्रेरी की शुरुआत मैंने 2010 में की, जब मैं कक्षा 8 में थी। और आज हमारे 11 लाइब्रेरीज़ हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है हमारे लाइब्रेरीज़ की, जो बच्चे कक्षा दूसरी में, कक्षा पहली में हमारे लाइब्रेरीज़ में जुड़े थे, आज ये वो 11 लाइब्रेरीज़ वही बच्चे संचालित करते हैं। थैंक यू। तो ये ताकत है लाइब्रेरीज़ की कि लाइब्रेरीज़ में ये संभावनाएं पनपती हैं। और क्यों ज़रूरत है लाइब्रेरी की, एक छोटी सी बात से ख़त्म करूँगी कि इस लाइब्रेरी के साथ साथ पिछले 1 साल से रिसर्च पसमानदा मुस्लिम समुदायों के साथ में मध्य प्रदेश में एक छोटा सा रिसर्च का काम कर रही हूँ। और एक बहुत छोटा उदाहरण के साथ बोलूँगी कि मध्य प्रदेश का बड़ा ज़िला है, जबलपुर शहर है। उस शहर में डफाले समुदाय में शिक्षा का रेशो 0 है। आज़ादी के 75 साल के बाद पसमानदा मुसलमान में, डफाले कम्युनिटी में अगर शिक्षा का जबलपुर जैसे शहर में रेशो 0 है, तो आप समझिए कि किस तरह ज़रूरत है, कि बेसिक किताबों की कितनी ज़रूरत है हमारे देश में। बाकी हम और मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। ये सब हालातों और ज़रूरतों के मद्देनज़र और ख़ुद ज़िंदगी में अनुभव करते हुए लाइब्रेरी के काम की शुरुआत की और इस काम के साथ में जुड़ी रही हूँ। शुक्रिया। Thank you so much, Sabha, for enlightening us. In my introduction and in everybody's introduction, there is the mention of word free, that all these libraries are free. And as Emily has said, that the public library in Dibrugarh asks for ₹15 as a lifetime membership fee. But why we all are running a free library, and why is free so crucial? I think maybe Sumit, we can begin with you. Yeah. हाँ, मतलब फ्री की बात करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। पर फ्री, क्योंकि फ्री का मतलब है इक्वल, फ्री का मतलब है एंटी कास्ट। और फ्री सिर्फ मॉनेटरीली नहीं कि मतलब पैसे ना लगें, ये बहुत ज़रूरी है। बट फ्री हो अपनी आइडेंटिटी को ओन करने के लिए, अपनी पसंद की किताबें पढ़ने के लिए, अपने टाइम और अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने के लिए फ्री होना बहुत ज़रूरी है। और जिसलिए आज हम बैठेंगे, हमारा पीपल्स नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी वो इसी फ्री की बात कर रहा है। वो फ्री के साथ एंटी कास्ट होने की बात कर रहा है। वो फ्री के साथ इस चीज़ का हमेशा से ध्यान रख रहा है कि हमारे देश में समानता नहीं है और हमारे देश में जातिवाद का ढांचा भी है। और हम फ्री उसको बिना ध्यान में रखे नहीं बना सकते, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि इनइक्वालिटीज़ पीपल आर फेसिंग इन आवर कंट्री, उसको बिना सोचे हम फ्री नहीं बना सकते। और फ्री के साथ एंटी कास्ट होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फ्री के साथ अक्सर एक ह्यूमिलेशन जोड़ दिया जाता है। अब हम बहुत सारे लोग, मतलब मैं तो अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को यूज़ करता हूँ और वो मुफ्त हैं, बट हमेशा वहाँ जाने के बाद और वहाँ से आने के बाद हमेशा एक ह्यूमिलेशन मेरे साथ वापस मैं एक ह्यूमिलेशन के